Okay, so yeah, good afternoon everyone, right? So we will start with the typical discussion, है ना? So tell me, see, you have to tell me, right, that what are the doubts that you have, okay? Or I'll just discuss the problems which is more conceptual, okay? जो मुझे लगेगा कि सही हो तो ज़्यादा अच्छा है, right? वो discuss करूँगा and your doubts, right? संपदा मनोगना, good afternoon Sinchana, right? Nanya, ध्रुव, जोयल, क्रिश, ओमकार, प्रज्ञा, प्रवलिका, शांति, स्मरणिका, Nazneen, like, have you joined from your brothers or some sisters account? Tanzila, who's okay. Chalo, so 1 to 5. Tell me 1 to 5. How many of you solved 1 to 5? Anyone have a doubt? 1 to 5 में? I guess 1 to 5 में doubt नहीं होना चाहिए, but if anyone have any doubt in 1 to 5, please let me know. 4, 5. Okay. So let us see question number 4. A heavy uniform chain lies on a horizontal tabletop. If the coefficient of friction between the chain and the table surface is this, then the maximum fraction of length of the chain that can hang over the edge. So don't you think that it is easy actually? Right? Think about it now. If it is a chain, right? So I can say, right, due to the hanged portion, there will be force of mg downward direction, and that should be equal to what? Tell me, this force will give rise to tension. Hi, Anna. Yes or no? Right? Agree. So can I say that tension due to, right? Because at this point of time, at यहाँ पे जो tension होगा ना, tension will be equal to this. So forget about chain संपदा. अगर तुमसे ये सवाल पूछा जाता, think about it. अगर तुमसे ऐसा सवाल पूछा जाता, guys, think about it, right? If a problem would be like this, tell me, solve हो जाता, everyone. If the problem would be like this, solve हो जाता. हाँ या ना? है ना? So ये जो problem है, almost same है ना? हाँ या ना? Tell me, don't you think? Right? Instead of two masses, right? एक continuous chain दे दिया है. So ये नीचे की ओर और ये इधर की ओर है ना? Right? Okay, got it? तो इसके कारण suppose this length, right? This length is what? This length is suppose L1 and this length is L2. L2. Why I'm saying length? Because the mass density will be same, right? So I can say, if you just think about it, mg minus tension should be equal to what? Now this question is not that easy, but यहाँ पे मुझे variable mass का concept नहीं लेना है ना, because वो concept, right, हमको बहुत simple calculation करना है ना? So is equal to what? Tell me. If you're talking about equilibrium, it should be equal to 0. Mg should be equal to T. And here, tension should be equal to friction, mu n. समझ में आया? Got it संपदा? I hope fourth समझ में आ गया तुमको? बन जाएगा? Okay? चलो. अब यहाँ पे जो m है ना, this mass and this mass, उसको तुमको बस length के term में लिखना है. So that would be what? Mass density into length. ठीक है? Because mass density will be same. So this is done. Fourth concept समझ में आ गया? Fifth, a rope of length L and mass m is hanging from a right support. The tension in the rope at a distance x from the rigid support is. Now यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा concept use हो गया बताओ? You have, right, either you can solve directly or you can use integration. But I guess all of you have solved problem like this, right? If we have a massless rope और यहाँ पे कोई mass रहता है, then I say that tension is same throughout. हाँ या ना? The concept that we will study over here is this only ना. अगर massless rope रहता है and mass is at the bottom, right? Then I say, so tension throughout the rope is same, which is equal to what? Mg. But since this rope is not massless, right? This rope is not massless, है ना? So अगर rope massless नहीं है,
So tell me, as you go up, the mass will increase, right? Yes or no? Okay. Now, if the mass will increase, the tension will also change. Yes or no? Hi, Anna. Clear is a concept. So can I say, sir, right? If I'm talking about this point, everyone, please focus on this concept. Okay. So suppose if I'm talking about this point, at this point, the mass will be total mass. Hi, Anna. Tell me, right? At this point, the mass, the tension will be due to this mass only. Okay. So can I say, okay, sir, the tension will depend on what? Tell me, tension will depend on what? Tell me. Batao. Tension will depend on the mass. Yes or no? Hi, Anna. Agree? Right? Agree. So suppose this length is x. This length is x, right? Think about it. This length is x and you want to find the tension at this point. So the tension will be due to this mass only, na, green mass only. ये सबको समझ में आ गया? हाथ डालो. Right, Sampada? Very good. So can I say, sir, tension will be what? Mu into x. Mu is what? Total mass by total length into this length x into g. Got it? Tell me, got it? Right? But question में दिया हुआ है x is from the rigid support. Question में ये x ना देके ये x दिया हुआ है. This is x, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? This is total L minus x ना? है कि नहीं? यहाँ पे mu x की जगह पे हमें क्या चाहिए? Mu L minus x. मैं बस समझाने के लिए लिख रहा था. But according to this problem, this is x and this is L minus x. Okay. So mu L minus x into g. And mu is what? M by L. Got it, Sampradha? Clear हो गया? So this is a concept. Everyone should keep this in your mind. Okay. So 1 to 5 is done. Now till question number 10. Till question number 10, everyone. Till question number 10. Fifth the concept. Write it down if you want to write it down. That the tension will not be same if mass of the rope is given, right? If mass we have to consider, then the tension will not be same. Okay, 8th and 10th. So 8th देखो. Now, अब concept हमेशा ध्यान दो कि what you're not getting in 8th. Think about it, everyone. First of all, whenever we talk about problems of NLM, first thing what we have to do, tell me. First thing what we have to do. सबसे पहला चीज क्या करना होता है? Everyone, tell me. First thing, the first thing that we should know is, tell me, free body diagram. मुझे ये अच्छे से आना चाहिए, right? FBD. Because अगर FBD, yes, very good Sampata. अगर FBD सही आता है, if I know how to draw or if I can draw all the forces, right, correctly, then I just have to solve the equation. Now, when you talk about FBD over here, right? So obviously I have to draw the FBD of this object, right? This system. Now tell me, rope, first concept, rope is same or different? Tell me, rope is same or different? See how you have to just think about small concepts. Rope is same or different? Same, correct. So if rope is same, then tension will be same or different? And rope is massless. Rope is given as massless. So tension will be same, correct, awesome. So can I say, sir, यहाँ पे ये जो tension T है और यहाँ पे जो tension T रहेगा, that would be same? Yes or no? That is the first concept, right? सबसे clear हो गया? Okay, awesome. Now second, भाई साहब ये जो भाई साहब है हमारे सूट बूट वाले, इनके कारण एक mg नीचे की ओर लग रहा होगा, राइट? है ना? और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट, है ना, बोर्ड, इसका ही मास है, तो इसके कारण भी एक mg नीचे की लग रहा होगा. सो दिस इज कैपिटल M एंड दिस इज स्मॉल mg. ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? यस और नो? आई गेस दिस इज क्लियर, राइट? जो ऑब्वियस है हम वो लिख रहे हैं, जो ऑब्वियस फोर्स वो लिख रहे हैं. एंड नाउ वी नो एक्शन रिएक्शन. So if mg is downward, there will be normal force in upward direction.
राइट, एंड वी नो अगर ये पुल कर रहा है इधर तो इसकी मूव करने की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एंड इट इज गिवन, राइट, इट इज गिवन, ठीक है, कि ये फोर्स स्मूथ नहीं है, देयर विल बी फ्रिक्शन आल्सो, सो फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, there will be a tendency, right, to move in this direction, so there will be a friction force in this direction, so there will be a friction force in this direction. Now tell me, अब बताओ, first FBD तो clear हो गया ना, anyone have any doubt in FBD, anyone have any doubt in FBD? Clear? अब बताओ FBD के बाद second step क्या होता है, what is the second step, what is second step, बताओ, what is second step? ना फोर्स तो मैंने मार्क कर दिया ना सिंचना, फोर्स तो मैंने मार्क कर दिया, राइट, है ना, क्या होता है, so Newton's second law, right, okay, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ इन रिस्पेक्टिव एक्सिस, राइट, है ना, राइट इक्वेशंस, राइट, फोर्स इक्वेशंस, फोर्स इक्वेशन इन रिस्पेक्टिव एक्सिस, एक्सिस, राइट, है ना, दैट इज व्हाट वी डू, क्लियर हो गया, यस और नो, सो सारे एक्स वाले एक साथ और वाई वाले एक साथ, राइट, दैट इज व्हाट वी डू ना, चलो देखते हैं एक्स में कौन कौन सा फोर्स है, टेल मी, एक्स में कौन कौन सा फोर्स है, एवरीवन, एक्स में कौन कौन सा फोर्स है, एक्स में सर फ्रिक्शन और टेंशन है, यस और नो, इज देयर एनी अदर फोर्स, is any other force, yes, है ना, right, so can I say sir tension minus friction should be equal to ma, right, general, yes or no, right, हाँ या ना, I don't know कि एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा, I will just put the value 0 later, I'm just writing the general equation, okay, right, now यहाँ पे f minus t नहीं होगा ना, I hope all of you have this much, right, idea that f minus t नहीं होगा, friction can never be greater than tension, yes or no, फ्रिक्शन कारण तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा ना, यस और नो, राइट, तो कोई ये पाप नहीं करेगा ना f माइनस टी, राइट, चलो, बट मेन यहाँ पे y एक्सिस में है, मेन y एक्सिस है, सो इफ यू टॉक अबाउट y एक्सिस आई कैन से नॉर्मल ऊपर की ओर, और अब देखो ये ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए, इसके लिए टेंशन तो ऊपर की ओर लगेगा ना, बिकॉज फॉर दिस इट इज डाउनवर्ड, बट फॉर दिस पर्सन इट विल बी अपवर्ड, हाँ या ना, राइट, क्लियर है, एग्री, राइट, बिकॉज रस्सी के लिए, पुली के लिए ऐसे है, इसके लिए तो ऐसे होगा, सो अपवर्ड फोर्स क्या हो गया, नॉर्मल प्लस टेंशन इज अपवर्ड, राइट, माइनस डाउनवर्ड फोर्स कौन सा हो गया, डाउनवर्ड फोर्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू, सॉरी स्मॉल एम जी, वेट, करेक्ट, अब बताओ ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है क्या, ये ऊपर की ओर तो मूव नहीं कर रहा ना, कॉमन सेंस सर, ऊपर की ओर कैसे मूव करेगा सर, ऊपर की ओर मूव करेगा तो नॉर्मल तो खत्म हो जाएगा ना, so the acceleration in y direction is 0, acceleration in y direction is 0, yes or no, right, अब यहाँ पे सवाल जो पूछा गया है या बोला गया बोर्ड डज नॉट मूव, मतलब ये भी 0 है, दिस इज ऑल्सो 0, अब I guess all of you can solve easily, right, all of you can solve easily, it is linear equation in two variable, can you solve linear equation two variable, right, because if you know step 1 step 2 ना, then physics तो step 1 के बाद ही खत्म हो जाता है, yes or no, tell me, physics step 1 के बाद खत्म हो जाता है, if you can draw FBD correctly you can solve all the problems, FBD गलत है तो गलत हो गया, बाकी तो मैथ्स है ना, so this tension, right, the maximum amount of tension should be less than equal to friction, है ना, I guess all of you can solve this now, right, and friction is equal to what, mu n, can you solve this, raise your hand, right, we know यहाँ से n कितना हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m into g minus t, right,
and here T is less than equal to friction, and friction is equal to what, right? Or T is equal to F, and this F is less than equal to mu n. n का वैल्यू पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है, टेंशन का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा, निकल जाएगा। आई गेस यस, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया। ठीक है, चलो ओके, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 की जब बात कर रहे हो ना, तो तुम्हारा FBD, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। FBD सही है, सब कुछ सही है। So if a coefficient of friction between an insect and a ball, okay, I guess question number 9 वाला ही डायग्राम है, राइट? हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 9 वाला है ना? So क्वेश्चन नंबर 9 बन गया, तो don't you think कि 10 भी बन जाना चाहिए? Let us see. If the coefficient of friction between the insect and bowl is nu, and the radius of the bowl is r, the maximum height up to which the insects can crawl is. Now tell me, insects कब तक crawl कर पाएगा? जब तक downward force, right, friction के equal है, yes or no? Tell me, right? Yes or no? है ना? So मान लो crawl करके यहाँ तक गया, crawl करके यहाँ तक गया. This is your insects, right? So there's always a component, right? A component of mg which is trying to pull it. Yes or no? है ना? Visualize करो, physics को visualize करो. There's a tell me what? Component of mg which will try to, है ना? अगर तुम ऊपर चढ़ते हो, कहीं भी ऊपर चढ़ते हो, तुमको एक कंपोनेंट रहता है ना mg का. So mg is in this direction. FBD, everyone, FBD, right? So this direction will be what? I guess all of you can relate to this, है ना? All of you can relate to this. If this is angle alpha, this angle alpha, हाँ है ना? Right? Parallel हो गया ये दोनों. So this is what? mg cos alpha. This is mg sin alpha. Right? Agree? और ये हो गया इधर नॉर्मल, और ये इधर हो गया फ्रिक्शन. नाउ कैन यू सॉल्व इट? टेल मी, कैन यू सॉल्व इट? नॉर्मल इज इक्वल टू व्हाट? mg cos अल्फा, है ना? राइट? एंड mg sin अल्फा शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन. यहां तक किसको दिक्कत है? रेज योर हैंड. यहां तक किसको दिक्कत है? रेज योर हैंड. राइट? अब बताओ, तुमको नहीं लगता कि सर फिजिक्स तो यहीं पे खत्म हो गया, अब तो बस मैथ्स है? हाँ या ना? फिजिक्स तो यहीं पे खत्म हो गया, अब सिर्फ मैथ्स है. बिकॉज तुमको सॉल्व करना है रेडियस के टर्म में. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, राइट? है ना? रेडियस के टर्म में तुमको क्या निकालना है? हाइट निकालना है. यू हैव टू फाइंड द हाइट, दिस हाइट इन टर्म्स ऑफ रेडियस. कैन यू डू दैट? टेल मी, कैन यू डू दैट? थिंक अबाउट इट. क्या बोलो? yes or no? Because if you divide this, sir, we know, right? हमको 9 सॉल्व करते ही पता चल गया था tan थीटा और tan अल्फा यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? f by n, and we know f is equal to what? mu n by n. n कट गया तो tan अल्फा is equal to mu. So अगर tan अल्फा निकल गया तो हमको cos अल्फा sin अल्फा निकल जाएगा. yes or no? हाँ या ना? right? agree? है ना? फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाकर मुझे ये हाइट जो भी चाहिए निकल जाएगा. टेल मी, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस नाउ? संपदा, समझ में आ गया? भावना, वेरी गुड. स्मरणिका, वरुण, अनघा, श्रीकर, सुहान, सिंचना, एवरीवन, बताइए, समझ में आ गया आप लोगों को? हाथ उठा लीजिए ऐसे. वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? चलो कैलकुलेट, अभी इजी नहीं कैलकुलेशन करना है, राइट? ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पे. आई गेस इतना ट्रिग्नोमेट्री तो किया हुआ है ना, राइट? ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये एंगल पता चल गया, राइट? अगर तुम इसको h मानते हो तो ये r माइनस h हो जाएगा, राइट? देन cos अल्फा sin अल्फा न्यू के टर्म्स में निकल जाएगा. इक्वेट करना है बस. ओके, नाउ 11 to 15, आई गेस 11 to 15, 11 12 तो हो जाना चाहिए. 11 to 15 में 11 to 15, 11 to 15, any doubts? 11 to 15,
11 to 15 बताइए 11 to 15 में किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत? नो राइट, ये लामीज थ्योरम से बन जाएगा ना, 13 लामीज थ्योरम से बन जाएगा आई गेस, ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व इट, है ना? और जस्ट कंपोनेंट को इक्वेट करके बन जाएगा। 14th इज राइट, 14th इज आल्सो इजी। 15th हो जाएगा सबसे? 15th टेल मी 15th, बिकॉज 15th वाला कॉन्सेप्ट आगे कई बार यूज होगा, है ना? राइट, आई गेस ऑल ऑफ यू कैन जस्ट फाइंड द this is the concept based on pseudo force, yes or no? Pseudo force का concept पता है ना? Right, everyone know the concept of pseudo force, right? Hi Anna, can you give me one example of pseudo force? Anyone? Smarnika, one example of pseudo force. If you are like moving in a car, or if car suddenly right accelerates, we tends to move backward. That is the example of pseudo force, yes or no? Right, that is a force due to non-inertial frame of reference, right? Or basically accelerated frame of reference, है ना? चलो, okay, anyways I will send the solution also, ठीक है? So जो जो concepts है वो पूछ लो, नहीं तो solution तो देख ही सकते हो। 20 तक में बताओ, 20 तक में everyone, 20 तक में, till question number 20, any doubts till question number 20? 15 के बाद 16 लामीज हो जाएगा, 17 हो जाएगा हम लोगों से, 18 भी हो जाएगा, है ना? 18 भी हो जाएगा, 19 is also easy, right? You just have to, right, you just have to take the components, that's it। 20 बताओ, 20 anyone? 20 में डाउट है? 19 ओके, 19 एंड 20 देखो, 19 देखो, 19 कितना इजी है, यहाँ पे रखा हुआ है राइट, और ये भाई साहब इधर मूव कर रहे हैं, सॉरी ये भाई साहब इधर मूव कर रहे हैं, है ना? तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है पहले बताओ। सो ओके राइट, now if you think about it, this body cannot move, right? इसका acceleration with respect to this zero होगा, yes or no? The acceleration of this with respect to this card is zero, because obviously move नहीं कर सकता है ना? But because of pseudo force, there will be tendency to move, yes or no? Imagine, physics is all about imagination, है ना? जिसका imagination अच्छा है उसका physics अच्छा है। So don't you think sir, अगर ये नहीं रहता, अगर ये पार्ट नहीं रहता तो ये इधर की ओर जाना चाहता, yes or no? Because of pseudo force, so it will apply a force in this direction because of pseudo force, and because of that this surface, right, this surface will have a normal force in this direction, yes or no? Right, because pseudo force को हम यहाँ consider नहीं करेंगे ना, because acceleration तो zero है, but normal force is a real force, right, है ना? I'm talking about the force exerted on this ball, right? I do not consider the force exerted on this. I'm considering the force exerted on this ball. So I can say, sir, there is a force in this direction due to normal. यहाँ पे normal कारण ही सारे force है, और एक force भाई साहब इसके कारण है, इस direction normal के कारण. This is also normal n1, this is normal n2, और एक force mg नीचे की ओर, अब क्या करना है सर? ये एंगल पता है, कॉम्पोनेंट ले लेना है ना, n1 sin थीटा, n1 cos theta, so n1 cos theta is equal to n2, n1 sin theta is equal to ng. Can you solve it? Tell me, can you solve it? Hi Anna, agree? Okay,
राइट। अब बताओ कौन सा फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, टेल मी। कौन सा फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है? कौन सा फोर्स? कॉमन सेंस, तुमको सॉल्व नहीं करना है इसको, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। which force is depending on acceleration, tell me, which force is depending on acceleration, n1 और n2? n1 डिपेंड कर रहा है कि n2 डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, n1 और n2? n2, कॉमन सेंस, एग्जैक्टली, वेरी गुड। बिकॉज सर ये ज्यादा मूव होएगा तो इस पे सूडो फोर्स ज्यादा लगेगा और रिएक्शन ज्यादा लगेगा, है ना? एग्जैक्टली। So I guess without solving, can you tell me the answer? Tell me without solving. See, just using the concepts. Can you tell me the answer? Right, Sampada? Batao abhi. So what's the answer? I guess all of you can tell me the answer now, hai na? C, awesome, correct, है ना? Very good, very good, है ना? Because ये तो MgO component balance कर रहा है, so I don't think that then anything will happen to, right? Okay, awesome. Next. ठीक है, चलो next 20. Next 20. Now when you see this 20, everyone, FBD, सबसे NLM is very easy if you draw FBD. Now first of all तुमको निकालना क्या है? तुमको निकालना क्या? Acceleration just after it is released. So इस पे देखो, and someone जब भी ऐसे प्रॉब्लम है ना, put mass on this, simple, mass को पुली पे डाल दो, ठीक है? मास को पुली पे डाल दो. So if you put mass on this pulley, right? So नीचे की ओर FBD ड्रॉ करो, इस पे नीचे की ओर फोर्स लग गया mg, right? अब बताओ ये क्या है? What is this? What is this force? Everyone tell me, what is this force? Tell me, what is this force? Tension. और ये फोर्स भी क्या होगा? टेंशन, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली सेम वायर तो टेंशन सेम होना चाहिए ना, बट यहाँ पे जो टेंशन है वो किस पे बैलेंस हो रहा है? kx से, एग्री? हाँ या ना? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत है हाथ उठा लो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है हाथ उठा लो. टेल मी ना. अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है एवरीवन, कॉन्सेप्ट क्या है? The problem is this, mass m is shown the figure is in equilibrium. पहले equilibrium में था, so अगर ये equilibrium में था, can I say that 2t is equal to mg? ये जो 2t है, this is equal to mg in equilibrium, at equilibrium. Yes or no? Tell me. हाँ या ना? राइट? कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस और कुछ नहीं करना है ना? Now what has happened? If it is displaced further by x, if it is displaced further by x, अब इसको क्या किया? नीचे x की ओर खींच दिया गया. तो अगर नीचे x खींचा गया है तो ये रस्सी कितना खिंचाएगा? टेल मी. If this is pulled by x distance, then this rope will extend, right? By how much distance? Tell me. ये थोड़ा सा विजुअलाइज करना. वेरी गुड संपदा, है ना? बिकॉज x डिस्टेंस ये भी नीचे जाएगा, x डिस्टेंस ये भी नीचे जाएगा, सो जो रस्सी है, राइट, वो 2x खींचेगा, 2x, एग्री, राइट? और ये 2x फोर्स किस पे बैलेंस्ड होगा? इसके कारण बैलेंस्ड होगा, यस और नो, राइट? सो जो नया टेंशन है, जो नया टेंशन T डैश है, दैट शुड बी बैलेंस्ड बाय दिस 2kx फोर्स, यस और नो? हाँ या ना? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? टेल मी. Anyone have a doubt in this? Raise your hand. Tell me yes. Okay.
So tension increased. This is the increased tension. This is the increased tension. Ayana. Anyone have any doubt in this? Tell me. Anyone have any doubt in this? This? ठीक है. So जो unbalanced force वो create. अब इसके कारण जो unbalanced force create हो गया वो कितना हो गया? Tell me. Everyone. बताओ. Everyone, tell me. Unbalanced force would be what? 2t dash. 2t dash should be equal to what? 2t dash should be equal to what? बताओ. Unbalanced force. 2d dash should be equal to ma ना, right? Because it is unbalanced. और ये क्या है? Right? What is this? This is just the change. This is just the change. Yes or no? Right? And this force will give acceleration. This is the unbalanced force. This is not the net force. This is the unbalanced force. Because actually क्या होगा? Initial mass फाइंड करोगे तो तुम्हारा tt रहेगा, mg कट जाएगा. So सिर्फ ये बचेगा. ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं? Tell me. ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? Everyone. I'm just calculating the change in forces, right? And what is t dash? What is t dash? Is 2kx. So what is acceleration? I guess all of you can find the acceleration now. 2 into 2kx by m. So 4kx by m. Got it? सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब चलो, yes or no? Very good, Bhavna. Because this is not in equilibrium, right? जैसे इसको pull किया ना, right? Equilibrium disturb हो गया. And pull करने के कारण extra जो force है, उसके कारण acceleration होगा. So this is extra force, right? Okay, or change in force, change in tension. Okay, so I guess this is done. है ना? 21 आराम से tension की जगह बस kx ले लिया है, right? So 25 तक बताओ. TPP questions अच्छे हैं. Okay, so it's fine. If you ask doubts, it is good. 22, 23 में doubts है किसी को? 22, 23 में doubts है किसी को? 22, 23. Everyone. Any doubts in 22, 23? Sampada, Smarnika, Neha, Pragna, Suhas, Zain. 22, 23, okay. Now, let us see question number 22, everyone. 22. सबसे पहली बात, FBD, right? है ना? So in the figure, all these surfaces are smooth. Friction नहीं है भाई साहब, है ना? Right? इनसे पूछा क्या गया है? Just how the system is released. Okay, right? Multiple correct option. अब देखा जाए कि क्या-क्या हो रहा है. Can we consider this as one system? Tell me. Can we consider this as one system? हाँ या ना? सबसे पहला सवाल. सबसे पहला सवाल. Can we consider this as one system? Yes. है ना? बस दोनों का मास को add up कर दो, बाकी कुछ नहीं करना है. Right? So instead of having two, I can just consider it as one system. Right? I'll just consider it as one system. और इसका mass is mass of A plus mass of B. Mass of A plus mass of B. That's it. और कुछ नहीं करना है. Agree? So ये झूठ मूठ का दो confusion के लिए दिया हुआ है. Okay? Right? अब इस पे मुझे क्या करना है? FBD draw करना है. क्या करना है? FBD. Right? So FBD draw करूंगा तो मुझे FBD कैसे निकलेगा? या इस पे ही FBD draw करना है. So ये ऊपर वाले के कारण नीचे की ओर क्या है? एक F फोर्स लग रहा है. हाँ या ना? ऊपर इसके कारण mg नीचे की ओर फोर्स लग रहा है. Yes or no? So एक mag, right? अगर दोनों सिस्टम कंसीडर कर लोगे, है ना? मैंने जैसे दोनों सिस्टम कंसीडर कर लिया तो टोटल मास क्या हो गया? ma plus mb, है ना? टोटल अगर इसी को कंसीडर कर लोगे दोनों के कारण तो टोटल मास इज ma plus mb.
सो एक नीचे की ओर फोर्स है ma प्लस mb into g. This is one force नीचे की ओर. Any other force is there? Tell me, any other force is there? Normal force. Awesome. Correct. Correct. Very good. Second से सर एक नीचे की ओर फोर्स हो गया और एक नॉर्मल फोर्स ऐसा हो गया. अब बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है और? सी कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है. कोई और फोर्स है इसके कारण? नहीं, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन तो है नहीं. अब डोंट यू थिंक कि you just have to do what? Take the component. Yes or no? इस फोर्स का राइट ma plus mb का component ले लेना है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में. This component will be responsible for acceleration. This component will be responsible for normal. Khatam. Yes or no? हाँ या ना? Tell me. Right? So this is the concept. मुझे solve नहीं करना, कुछ आंसर नहीं चाहिए. Right? मुझे बस कॉन्सेप्ट देखना है. अब देखो ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन देखते हैं. Which of the following is okay? Acceleration of A related to ground is in negative direction. अरे ये तो सही है. Common sense. दोनों साथ में ही है ना, तो नीचे की ओर जा रहा है. Right? Correct. Acceleration of A relative to B is in positive x direction. Acceleration of A relative to B is in positive x direction. ये भी सही है. क्यों? क्यों? देखो ये जा क्या रहा है? B किधर जा रहा है? एवरीवन B किधर जा रहा है? B इधर जा रहा है. मतलब ये S से और ये S से. तो A पे सूडो फोर्स किधर लगेगा? अगर B इधर जा रहा है तो A पे सूडो फोर्स किधर लगेगा? टेल मी. अगर B इधर मूव कर रहा है, राइट, B इज एक्सेलरेटिंग मोशन, राइट, है ना, तो A पे सूडो फोर्स लगेगा, वो भी इधर की ओर. यस और नो? एग्री? बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स नहीं है ना, है कि नहीं? तो A का मोशन इधर होना चाहिए, राइट? क्लियर? सो दिस इज आल्सो ट्रू. करेक्ट. थर्ड, the horizontal acceleration of B relative to ground is in negative x direction. हाँ तो सही है ना, अभी मैंने बोला कि सर इधर जा रहा है, राइट, इधर जा रहा है, सही है. The acceleration of B related to ground along with inclination c is greater than g sin theta. The acceleration of B related to ground, the acceleration of B related to ground, right, is greater than g sin theta. ये सॉल्व करना है. yes or no? yes or no? Relative to ground. Tell me. Yes. How come, sir? When you talk about this, right, it is actually what? ma plus mb, right, g, tell me, sin theta. हाँ या ना? ma plus mb दोनों के कारण हो रहा है. yes or no? yes or no? right? And if you're talking about just acceleration of B, right, acceleration of B, so mb into a. So don't you think that even if you divide this by mb, this value is greater than g sin theta? हाँ या ना? Simple concept. Yes or no? Agree? समझ में आ गया तुमको? हाँ या ना? Okay, so 22 is clear. So इसका आंसर A B C D सब है, सब सही, सब सही. चलो 23 देखते हैं. 23. अब देखो, इतना देखकर डरना नहीं है. सिंपल कॉन्सेप्ट, फ्री बॉडी डायग्राम. ना ऐसे सवाल सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, राइट, बट हम अभी एक ही मेथड पढ़ेंगे, which is your distance method. And imagination, whenever we have these kind of problems, put this mass on the pulley, put this mass on the pulley, think आराम से डाल pulley. Okay, now एक चीज बताओ, if this pulley comes down, by x distance, right, ये रस्सी कितना खुलेगा? टेल मी, ये रस्सी कितना खुलेगा? एवरीवन विजुअलाइज, बताओ ये रस्सी कितना खुलेगा? अगर ये x नीचे आएगा तो ये रस्सी कितना खुलेगा? टेल मी. 2x ना गाइस. सी, अगर भाई साहब ये पुली x डिस्टेंस नीचे आ रहा है, ये यहां से लेकर यहां आ रहा है, थिंक अबाउट इट.
तो ये भी x खुलेगा और ये भी x खुलेगा, यस और नो? तो टोटल रस्सी 2x खुलेगा ना. दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट? यस और नो? टेल मी, यस और नो? गॉट इट? ये डिस्टेंस, बिकॉज you have to see, right? You have to visualize. ठीक है, right? This is called a distance method, right? Because the rope of length, the length of the rope is constant, right? है ना? ओके okay? और चलो तुमको एक और सिंपल सवाल दे रहे हैं. ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे देखो, ये अगर टेंशन T है, सपोज दिस टेंशन इज T, राइट? दिस टेंशन इज T, so this should also be T, हाँ या ना? yes or no? राइट? थिंक रिवर्स, ये टेंशन T, ये भी T होगा, yes? और क्योंकि रोप सेम है, तो अगर ये T है तो ये भी T होगा. एग्री? रेज योर हैंड. yes or no? yes or no? राइट? तो अगर ये T और ये T है, तो ये टेंशन कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी दिस टेंशन? टेल मी, व्हाट शुड बी दिस टेंशन? This should balance these two forces ना. So ये टेंशन T डैश क्या हो जाएगा? बिकॉज ना स्ट्रिंग चेंज हो गया है, स्ट्रिंग चेंज हो गया है, टेंशन चेंज हो जाएगा. दिस T डैश शुड बी इक्वल टू व्हाट? 2T. एग्री? राइट? हाँ या ना? तो अगर ये 2T है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा ये भी T डैश होगा. दिस इज ऑल्सो 2T, राइट? है ना? अब बताओ, ये जो टेंशन, अब इस बारे में जो टेंशन होगा, और यू कैन जो डायरेक्टली इक्वेट इट, है ना? इस बारे में जो डायरेक्शन टेंशन होगा कितना होगा? 2T plus 2T 4T, हाँ या ना? करेक्ट. So can I say, sir, 4T is equal to what? Capital MA into G. Sorry. This is now. Capital MA into G minus 4T is equal to capital MA into A. हाँ या ना? Yes or no? Tell me. That is first equation. Yes or no? Okay. And यहाँ पे this tension minus MB, right? This tension minus, okay, this tension is equal to MB into A. No friction is there, na? So this tension is equal to MB into A dash, not A dash, because acceleration same. जरूरी नहीं है acceleration same हो. We have to see कि acceleration कितना change हो रहा है. ये सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? ये concept समझ में आ गया? Equation वाला, right? Now this is the case of constrained motion. Now you have to find the relationship between A and A dash. So I guess that we can solve by using length, right? Length concept. Sir, ये अगर नीचे जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो ये कितना नीचे जाएगा? 2x नीचे जाएगा, राइट? रस्सी 2x खुलेगा. अगर ये रस्सी 2x खुलेगा तो ये कितना खुलेगा? टेल मी बताओ. स्टेप बाय स्टेप. अगर ये x डिस्टेंस नीचे गया, ये x डिस्टेंस नीचे गया, तो ये रस्सी जो है वो 2x खुलेगा, हाँ या ना? राइट? अगर ये 2x खुलेगा तो ये रस्सी कितना खुलेगा? 4x खुलेगा. तो अगर ये 4x डिस्टेंस, राइट, अगर ये 4x डिस्टेंस इधर आएगा, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड फॉर दिस? 4x. यस और नो? तो अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा, तो व्हाट डू यू थिंक इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? टेल मी. दिस इज द डिस्टेंस मेथड, राइट? आई कैन राइट द इक्वेशन आल्सो कंस्ट्रेंट का, ठीक है? बट मैं बस विजुलाइज करवा रहा हूँ. ये x डिस्टेंस नीचे गया, राइट? तो ये 2x डिस्टेंस नीचे आएगा, ये 2x डिस्टेंस नीचे आएगा, तो ये 4x डिस्टेंस इधर आएगा. तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 4a, हाँ या ना? करेक्ट भावना, वेरी गुड. सो a dash is equal to 4a using constraint equation. ये सबको समझ में आया? टेल मी. ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये टाइम लगेगा. आई नो दैट मेनी ऑफ यू माइट नॉट गेट दिस, राइट? नहीं तुम पूछ रहे हो, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है. अब ध्यान दो मैं कैसे बता रहा हूँ. देखो, ये जो टोटल लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है, राइट, ये कांस्टेंट है, हाँ या ना? हाँ या ना? राइट? और ये जो टोटल लेंथ है ये कांस्टेंट है. दिस इज आल्सो कांस्टेंट, राइट? सो अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो रस्सी का लेंथ नहीं चेंज होगा ना, राइट? रस्सी का लेंथ जितना उतना ही रहेगा.
है ना? So all I'm saying is if this right pulley moves by x distance, right, ये पुली भाई साहब यहाँ से यहाँ आ गया, है ना, राइट, तो क्या होगा, ये रस्सी खुलेगा, ये रस्सी ऐसे हो जाएगा, राइट, सो ये डिस्टेंस भी x हो जाएगा और ये एडिशनल x हो जाएगा, ये x पिछले से x, ये x इधर और ये x इधर, तो टोटल ये रस्सी 2x डिस्टेंस मूव कर रहा है, यस और नो, राइट, है ना, मतलब ये जो है ये वाला पुली जो है, राइट, ये जो पुली है वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, 2x डिस्टेंस, 2x डिस्टेंस, दिस पुली इज मूविंग एट 2x डिस्टेंस, तो ये पुली 2x डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो ये भी 2x डिस्टेंस खुलेगा, ये भी 2x डिस्टेंस खुलेगा, तो अगर ये भी 2x डिस्टेंस खुलेगा और ये भी 2x डिस्टेंस खुलेगा, तो ऑब्वियसली ये तो फिक्स्ड है ना, ये फिक्स्ड है, तो मतलब क्या है, ये 4x डिस्टेंस आगे आएगा, यस और नो, राइट, अब समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट, राइट, हाँ या ना, ओके, चलो, सो आफ्टर दिस यू कैन सॉल्व इजीली, है ना, राइट, अंकित समझ में आ गया 23, सो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक कंस्ट्रेंट कॉन्सेप्ट है और दूसरा इक्वेशन कॉन्सेप्ट है, सो आई कैन जस्ट राइट इट डाउन, है ना, 40 and this 40 into 10 minus 40 is equal to 40 into a, और इसके लिए t is equal to 10 into 4a, तो t का वैल्यू तो ऐसे निकल गया, t is 40 है, पुट कर दूंगा यहाँ पे 400 minus 4 into 40a is equal to 40a, I guess all of you can solve na, 2, tell me 40, sorry, so 200a is equal to 400, so a is equal to 2, a निकल गया, फिर टेंशन निकल जाएगा, डन, टेल मी डन, ओके, नेक्स्ट, till 30, till question number 30, till question number 30, ये सिर्फ लामीज है, दिस इज लामीज, राइट, इफ यू सी दिस ना, दिस इज लामीज, इस डायरेक्शन फोर्स, इस डायरेक्शन फोर्स, इस डायरेक्शन, राइट, लामीज लगा दोगे तो हो जाएगा, है ना, f by sin theta 1, f1 by sin theta 1 is equal to f2 by sin theta 2 is equal to f3 by sin theta 3, right, this is your lamies, ठीक है, ओके, 24, 25 हो जाएगा, till 30, बताओ till 30, till क्वेश्चन नंबर 30, सोचो कि क्या नहीं आ रहा, बिकॉज सॉल्यूशन देखकर, राइट, सॉल्यूशन देखकर तुम एग्जाम में नहीं सॉल्व करोगे ना, राइट, सो 25, आई थिंक 25 तुमको एफबीडी आता तो बन जाना चाहिए, 26 इज अ गुड प्रॉब्लम, 26 कितने लोगों ने 26 किया है, 26 इज अ गुड प्रॉब्लम एक्चुअली, राइट, गुड मतलब कॉन्सेप्चुअली गुड, यू डोंट हैव टू सॉल्व, सिर्फ विजुलाइज करना है, सिर्फ विजुलाइज करना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट हैव टू विजुलाइज, 26, बताओ क्या लगता है 26 का आंसर क्या होगा, एवरीवन 26 का आंसर क्या होगा, टेल मी, 26 का आंसर क्या होगा, थिंक अबाउट इट, एवरीवन थिंक अबाउट इट, we'll discuss till 35, ठीक है, 35 तक आज कर लेंगे, okay, now think about it, if you see this, right, this is a smooth horizontal surface, है ना, this is also smooth horizontal surface, right, the only difference is here this force, right, is, right, pulling this one object only, हाँ ना, right, so if you draw the FBD on this object M, है ना, right, think about it, ये F है और ये F सेम हो जाएगा बिकॉज X डायरेक्शन, राइट, हाँ ना, okay, think about it, so in X direction for this, can I say that there's only one force,
there is only one force, that this F is equal to ma1, हाँ या ना? Tell me, raise your hand. नहीं ना, मूव करवा रहा है ना, ये इधर मूव करवा है ना. दिस इज नॉट जीरो, हाउ कम इट बिकम जीरो? Guys, sorry, my internet from phone was disconnected, right? That's why. So I was just saying, right? Draw the FBD, है ना? Draw the FBD, right? And friction is not there. Friction is not there. Okay. Draw the FBD and friction is not there. Okay. You can hear me now? Yes or no? Okay. Now tell me, large block, when you talk about this, all the forces, right? बड़े वाले block पे कोई force है क्या? Tell me, is there any force on the bigger block? Simple concept. Is there any force on the bigger block? Yes or no? Tell me. छोटे वाले पे ही हो रहा है ना? Is there any force on the bigger block? Yes or no? Tell me, guys. No. है ना? Because दोनों में देखो ना, इस पे कोई force नहीं लग रहा है, because frictionless है, इस पे कोई force नहीं है, right? Horizontal में, vertical में mg बैलेंस नॉर्मल है. Horizontal बात करना, horizontal में no force. तो अगर कोई force नहीं है दोनों केस में भी, तो आंसर क्या हो जाएगा? This. ठीक है? 26. So this is very simple and conceptual. ठीक है? Okay. Now 27. Everyone 27. 27 हो जाएगा, हाँ या ना? Tell me 27. Think about it. 27. System is shown as figure. Assume the cylinder remain in contact with the two wedges. The velocity of cylinder is. अब बताओ ये velocity का कारण क्या होगा? Tell me. Think about it. Think about it. ये भाई ऐसे है, ये भाई साहब तो मूव नहीं कर रहे हैं, है ना? Right? Okay. ठीक है? Now tell me, this is 2x, this is 2u, and this is u. Okay. And according to the problem, the cylinder is in contact. The cylinder is in contact. If the cylinder is in contact, what can we say? What can we say, right, about the velocities? Tell me. If the cylinder is in contact, right, what we can say about the velocity? Tell me. Suppose this is wedge 1, this is wedge 2. है ना? This is wedge 1, this is wedge 2, right? This is moving in this direction, this is moving in this direction. This is quite good and conceptual problem. ठीक है ना? Now, अब बताओ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से it remains in contact with the two wedges, right? It remains in contact with the two wedges, है ना? So concept क्या होना चाहिए? Tell me, क्या होना चाहिए? इसका velocity with respect to these two velocities, right, in this direction, है ना, जहाँ पे टच हुआ हुआ है, right, perpendicular direction में क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, तभी तो हमेशा टच में रहेगा ना, हाँ या ना? Don't you think that, sir, since
I'm talking about this. If the relative velocity of this, right, with respect to these two wedges should be 0, right, or relative, right, velocity should be equal. Yes or no? Okay. राइट, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगी नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये अच्छा सवाल है, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम. ओके, नाउ बताओ, जब ये इधर मूव कर रहा है तो दिस सरफेस मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, यस और नो, है ना? जब ये इधर मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली ये इधर मूव करना चाहेगा ना, इधर मूव करना चाहेगा. दिस दिस वेलोसिटी ऑफ दिस सिलेंडर विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली. ये तो कॉमन सेंस है ना? Right? Okay. So what? Suppose this is velocity of this is represented by vx. So what do you think? What is vx? What is the vx? What is the direction velocity of this in x direction? Tell me. कितना होना चाहिए? Because if it has to be in contact with this and it is moving with 2u, it should have the same velocity ना in x direction. 2u ही होना चाहिए. Yes, very good अंकित, है ना? Common sense, very good. ये समझ में आ गया क्योंकि ये हमेशा का कांटेक्ट में रहेगा और ये सरफेस टू यू से मूव कर रहा है तो इसको भी टू यू से मूव करना चाहिए. ओके, सो एक्स इज सॉर्टेड, एक्स में कोई दिक्कत नहीं है. आई गेस ऑल ऑफ यू कैन विजुअलाइज दिस, रेज योर हैंड. एक्स वाला समझ में आ गया, राइट, है ना? बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर. if it has to be in contact with this, right, the x velocity should be same. Now the issue is with y velocity because actually it will roll down, है ना? Actually it will roll down, right? X velocity is clear, but what about y velocity? Tell me, what about y velocity? That is the catch, right? Okay, y velocity क्या होगा? ये concept है. That is the problem. Now if you think about it, right, सर ये इधर मूव कर रहा है कितने डायरेक्शन से? यू, और ये ऐसे मूव कर रहा है, सो इसका नीचे की ओर वेज की ओर वेलोसिटी ऐसा होगा, हाँ या ना? टेल मी, राइट, एंड दिस इज यू, राइट, है ना? ओके, राइट. सो इसका जो y कंपोनेंट होगा, सपोज इसका y कंपोनेंट, है ना, इसका y कंपोनेंट इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज योर vy. इसका y कंपोनेंट vy, okay, right. Now with respect to this wedge, with respect to this wedge number 2, ये पॉइंट है ना, जैसे ये पॉइंट मतलब इससे टच छूटना नहीं चाहिए, हाँ या ना? राइट, so relative velocity with respect to this wedge should be 0 या इक्वल होना चाहिए, हाँ या ना? सो बताओ, अगर ये u है, दिस इज u, आई जस्ट ड्रॉ इट, ये u है. एवरीवन थिंक अबाउट, ये अच्छा सवाल हो गया है, राइट? दिस इज u, this is vy, right, this is also theta. So along the wedge, vb का डायरेक्शन क्या है? Tell me, along the wedge what's the direction of this along the wedge? ये अगर u है तो इधर में क्या हो गया? Tell me, ये हो गया u cos theta, ये u sin theta, है ना, परपेंडिकुलर वे में, क्योंकि ये छूटना नहीं चाहिए ना. दिस ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या चाहिए? 0, तब भी ये छोड़ेगा नहीं ना सरफेस. इमेजिन करो, इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो रहा है ना, तभी तो नहीं सरफेस छोड़ रहा है ना. दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, राइट? यस और नो? इन दिस डायरेक्शन द वेलोसिटी इज 0, दैट्स व्हाई दिस बॉल इज नॉट लीविंग दिस सरफेस. ये कॉन्सेप्ट है. सो ये कंपोनेंट क्या है भाई? ये कंपोनेंट है u sin theta, दिस कंपोनेंट, दिस u sin theta, राइट? ये क्या है? vy है, this is vy, okay. Now this is 90 minus theta, so this is also theta. इसका कंपोनेंट क्या हो गया? Tell me,
This should be equal to what? Tell me everyone. Right? और ये तुम्हारा Vx है, Vx है ना? Right? This is Vx. और ये थीटा आ गया. तो Vx कॉम्पोनेंट इधर क्या हो गया? Vx कॉम्पोनेंट इधर इज, टेल मी, Vx sin थीटा इस डायरेक्शन में, हाँ या ना? हाँ या ना? ये सबको समझ में आ गया? Okay, now you just have to balance the forces in this direction. You just have to balance the velocity in this direction. This direction में velocity क्या होना चाहिए? Equal होना चाहिए और yes or no? हाँ या ना? So can I say, so u sin theta should be equal to what? Vy cos theta, right, जो दिया हुआ है, minus Vx sin theta, right? This should be equal to this plus this. Yes, बोलो. Anyone have any doubt? Someone asked something? Anyone? No? तो तुमको Vy चाहिए ना, यहाँ से Vy चाहिए, Vy निकल जाएगा, इसको इधर ले जाओ, डिवाइड कर दो cos थीटा से, Vy निकल गया, तो Vy यहाँ से निकल गया, Vx यहाँ से निकल गया, so V total is root of Vx square plus Vy square. Got this? Tell me. Got this? Anyone have any doubt in this? ये अच्छा क्वेश्चन है. This is a good problem. This is actually a good problem. नोट कर लो. This is a good problem. Right? Relative velocity concept है ना? Right? Relative velocity concept है along the wedge. Okay? Okay. Right. So next 28 हो जाएगा. 29 also हो जाएगा. 29 is pseudo force concept. 29 जैसा क्वेश्चन किया होगा. 30 मैंने अभी समझाया है, मतलब अभी नहीं, मतलब आई हैव explained, right, how the length will be, right? Length से क्या होगा? Friction बस change होगा. So 30 you can solve. 31 also you can solve. 31, 32 सब theory है, ये सब solve हो जाएगा. 33 is a good problem. 33. Okay. Now good मतलब उतना भी अच्छा नहीं है, सिंपल ही है, right? एक्चुअली देखा जाए तो एक्चुअली बहुत सिंपल है ना? सॉरी, इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल. ये नीचे जा रहा है इधर, राइट? mg इधर होगा और फ्रिक्शन है, सिर्फ फ्रिक्शन इधर होगा, नॉर्मल ऐसे होगा, राइट? तो एक कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा, mj ये कंपोनेंट इधर रहेगा, राइट? हाँ या ना? ये एक्चुअली इजी है, हो जाएगा ये. 34 and 35. 34, 35. 34 without solving, can you solve? Yes, it is going upwards. No, this, right? See here, right? When you talk about this, if block is moving upwards, right? The block is moving upward, but upward कैसे क्यों move कर रहा है? Upward move किसके कारण कर रहा है? Which force? Tell me. Concept यहाँ पे ये है, upward क्यों move कर रहा है? Friction कारण ना? Because mg की tendency तो नीचे खींचने का है. Got it? यहाँ पे equation लिखेंगे, वो friction minus mg sin theta, mg cos theta जो भी है वो लिखेंगे, ठीक है? समझ में आया? Okay? Yes. Now 34 देखो, 34 without solving, can you tell me, right? यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, यस और नो? लिखा हुआ है ना, राइट? दैट both the blocks will move together without relative motion. Okay, right? So एक चीज बताओ, think about it. अगर मान लो यहाँ पे फोर्स लगाया गया, यहाँ पे फोर्स लगाया गया, है ना? यहाँ पे फोर्स लगाया गया, ओके? सो
if you draw the FBD, है ना, A और B दोनों केसेस के लिए. Now this is actually quite simple, right? Because if you talk about this, है ना, this, it is just like moving one object of weight 8 kg by applying a force. Yes or no? Tell me. Right? Okay. Okay. So if you talk about this, है ना, what you have to see? Tell me. Move करना है. So let us talk about this object. So A के लिए कितना होगा? इधर F लग रहा है, इधर mg है, क्योंकि इसके दिन इधर टेंडेंसी इधर है तो फ्रिक्शन इधर होगा, राइट? हाँ या ना? हाँ या ना? Okay, so for A, F1 minus friction, है ना? F1 minus friction is equal to MA into A. Okay, but for this छोटा वाला फ्रिक्शन के कारण ही, अब छोटे वाले फ्रिक्शन इधर लग रहा है, राइट? और इसका नहीं मूव कर रही है, so friction is equal to MB into A because net acceleration is right same. हाँ या ना? हाँ या ना? Okay, so if you talk about this, यहाँ पे acceleration कितना है? Acceleration is equal to what? Friction by MB और इस इक्वेशन के हिसाब से this is equal to F1 minus friction by MA. Agree? हाँ या ना? तो यहाँ से फ्रिक्शन का फॉर्मूला निकल जाएगा. Tell me, can you find the value of friction from here? Right? Or you just put the value, no? You just put the value. So I guess after putting the value, you can find A, है ना, in terms of friction, right? In the same way, if you talk about this, I told you, ये काफी simple है. इसमें total mass, right? Friction क्या हो जाएगा? F3, this is F3, F2, this should be F2 by the way. F2 minus friction is equal to, tell me, equal to what? बताओ. Is equal to what? Right? इसका, है ना? Tell me, MB ना, MB into A, और इस फ्रिक्शन का ये मूव हो रहा है, so this friction is equal to what? MA into A. The only difference is, right, फ्रिक्शन के कारण इसमें B मूव हो रहा था और इसमें फ्रिक्शन के कारण A मूव हो रहा है. That's it. ठीक है, right? So you just have to solve and compare. समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ये समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण कौन मूव हो रहा था? B मूव हो रहा था, राइट? और यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण A मूव हो रहा है. Yes or no? Tell me, yes or no? Right? Okay, चलो. So this is clear. Now 35 is easy. 35 जैसा बहुत प्रॉब्लम किया हुआ है क्लास में, बहुत किया होगा 35 जैसा प्रॉब्लम, बिकॉज मॉड्यूल में है. 35 जैसा प्रॉब्लम याद है कि नहीं? दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व कर लेना है. एक्सप्रेशन सेम रहेगा. ओके, वेरी गुड. सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस. टेल मी, ये TPP1 क्लियर हो गया? TPP क्लियर हो गया ये? हाँ या ना? राइट? ओके, चलो एक बार मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, है ना? प्लीज जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन, राइट? और हमारा जो नेक्स्ट डाउट सॉल्विंग रहेगा ना, उसमें हम लोग इसका क्या करेंगे? PYQ करेंगे, राइट? नीट वाला PYQ, प्रीवियस ईयर. ओके, राइट? सो गाइस, इसका टेस्ट हो सकता है खत्म हो चुका है. और भेज दिया ना? ओके, वेरी गुड. मैं भूल गया था. सो P4 का मैंने 2 वर्जन अपलोड कर दिया था. P4 का